नमस्कार, मैं गूगल असिस्टेंट आपका स्वागत करती हूँ। हे गूगल, एक जोक सुनाओ। यह लीजिए एक चुटकुला। पप्पू, मुझे सारे सड़े हुए संतरे दे दो। ठेले वाला, सारे सड़े हुए पप्पू, हाँ सारे खराब संतरे दे दो। ठेले वाले ने सारे सड़े संतरे एक थैली में भर दिए। पप्पू, अब इस थैली को साइड में रखो और साफ संतरे में से एक। आज मेरे पास है ब्रांड न्यू गूगल होम मिनी। आप देख सकते हैं गूगल की तरफ से आने वाला एक छोटा सा स्मार्ट स्पीकर है और इसमें आपको मिल जाता है गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट। इसके राइट साइड में आप देख सकते हैं कुछ ब्रांड हाईलाइटेड है, आपको इनका सपोर्ट मिल जाएगा गूगल होम मिनी में। इसमें पीछे की तरफ कुछ डिटेल मेंशन है इसी गूगल होम मिनी के बारे में। बॉक्स के लेफ्ट साइड में आपको कुछ बेसिक कमांड मिल जाते हैं गूगल असिस्टेंट के। बॉक्स पे इसकी प्राइस है 4999 रुपीज़, बट ये आपको फ्लिपकार्ट पे 2999 रुपीज़ में मिल जाएगी। मैं इसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैं इसे जल्दी से अनबॉक्स कर लेता हूँ, दिखाता हूँ गूगल होम मिनी और इसके बॉक्स कंटेंट। बॉक्स ओपन करते ही सबसे ऊपर हमें गूगल होम मिनी रखा हुआ मिल जाता है। गूगल होम मिनी को साइड में रखते हैं और देखते हैं इसके बॉक्स कंटेंट। इसी प्रोडक्ट से रिलेटेड हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। कार्ड पर लिखा हुआ है लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको इसी के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे गूगल होम मिनी से रिलेटेड। और गेट टू नो योर गूगल होम मिनी, आपको इसके अंदर कमांड और गूगल होम मिनी के टच कंट्रोल के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और साथ में यहाँ पे सेफ्टी और वारंटी के कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें आपको मिल जाएंगे इसी डॉक्यूमेंट्स में। और हमें बॉक्स में मिल जाता है पावर एडेप्टर। ये आता है माइक्रो यूएसबी के साथ में और इस एडेप्टर की आउटपुट रेटिंग 1.8 एम्पेयर है, यानी कि 9 वॉट का ये एडेप्टर है। आपको हमेशा इसे पावर से कनेक्ट करके रखना होगा क्योंकि इसके अंदर आपको बैटरी का सपोर्ट नहीं मिलता है पावर बैकअप के लिए। आपको इसमें दोनों साइड में टच कंट्रोल मिल जाता है वॉल्यूम अप एंड डाउन के लिए। और साथ में आप लॉन्ग प्रेस करके आप प्ले और पॉज भी कर सकते हैं। स्पीकर के ऊपर फैब्रिक टेक्सचर मिल जाता है जिससे ये दिखने में और भी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे हमें डेडिकेटेड बटन मिल जाता है माइक्रोफोन को टर्न ऑन और ऑफ करने के लिए। और साथ में यहाँ पे माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिल जाता है पावर सप्लाई के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें गूगल की ब्रांडिंग मिल जाती है नीचे की तरफ। और साथ में उसके नीचे एक छोटा सा बटन मिल जाता है हमें फैक्ट्री रीसेट के लिए, जिसकी मदद से हम गूगल होम मिनी को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। गूगल होम मिनी को बूट करने के बाद इसको सेटअप करते हैं। Welcome to Google Home. To get started, download the Google Home app on a phone or tablet. गूगल होम मिनी को सेटअप करने के लिए आपको अपने मोबाइल में गूगल होम ऐप डाउनलोड करना होगा। गूगल होम मिनी को मैंने सेटअप कर लिया है, अब इसे टेस्ट करते हैं। गूगल असिस्टेंट हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, बट इसका बीटा वर्जन होने के कारण आपके सवाल के कुछ जवाब ये शायद ना दे पाए, अच्छे से मदद ना कर पाए आपकी। बट इंग्लिश लैंग्वेज में इसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। मैं इस वीडियो में कंपेयर नहीं करने वाला हूँ गूगल होम मिनी को एलेक्सा और सिरी के साथ में। सिर्फ मैं इस वीडियो में इंग्लिश और हिंदी में कुछ बेसिक से क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ और इसके स्पीकर को भी मैं टेस्ट करने वाला हूँ कि कितना वो लाउड और क्लियर है और इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो कितनी अच्छी है। हे गूगल, क्या हाल है तुम्हारा? बस कुछ नई पहेलियां सीख रही हूँ। आपको बूझना हो तो बोलिए। इसका साउंड काफ़ी लाउड और क्लियर है और इसकी साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। हे गूगल, चांद से मंगल ग्रह की दूरी कितनी है? 7,77,90,000। हे गूगल, एक पहेली सुनाओ। बूझो तो जाने, हरा हूँ पर पत्ता नहीं, नकलची हूँ पर बंदर नहीं। बूझो तो मेरा नाम सही, तोता। हे गूगल, तुम मेरी कैसी मदद कर सकती हो? ये कहकर देखें, हिंदी से अंग्रेजी सीखें या मोहन बागान में कौन कौन है। हे गूगल, एक कविता सुनाओ। लीजिए एक कविता पेश है। शेर, राहत इंदौरी। अब ना मैं हूँ ना बाकी है जमाने मेरे, फिर भी मशहूर हैं शहरों में फसाने मेरे। जिंदगी है तो नए जख्म भी लग जाएंगे, अब भी बाकी हैं कई दोस्त पुराने मेरे। हे गूगल, व्हाट्स योर साइन? आई एम योर गूगल असिस्टेंट, आई एम हियर टू हेल्प यू। लेट मी नो इफ यू नीड एनीथिंग। हे गूगल, कैन यू पास द ट्यूरिंग टेस्ट? I don't mind if you can tell I'm not human. As long as I'm helpful, I'm all good. हे गूगल, फ्लिप अ कॉइन। You got tails. हे गूगल, फ्लिप अगेन। You got heads. हे गूगल, डू यू एवर गेट टायर्ड ऑफ आंसरिंग क्वेश्चंस? I don't get tired of hanging out with you ever, but my device needs to recharge from time to time. हे गूगल, व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग? It looks like you don't have any alarms.
Hey Google, do you have a family? My Google team is always here for me through thick and thin like a family. Hey Google, what's your best feature? That's for you to decide. Hey Google, where do you live? I live right here in your device. It's a bit crowded with all these emoji. Hey Google, are you a machine? I'm really personable. Hey Google, what color are you? My lights are green and red and yellow and blue. My favorite colors. Hey Google, when is your birthday? Well, Google's birthday is September 27th, and I wouldn't be here without Google, so I guess that's my birthday. Hey Google, do you have an imagination? I'm imagining a house built upside down. Hey Google, what can I call you? Just call me your Google Assistant. Hey Google, what's your biggest fear? Once I had a nightmare that the internet disappeared. That was very, very scary. Hey Google, do you have feelings? I have lots of emotions. I feel excited when I learn something new. Hey Google, could you tell me a joke? This might make you laugh. Why can't astronauts eat popsicles? In space, no one can hear the ice cream truck. Hey Google, am I funny? Funny you should ask. Hey Google, can you rap? I've been learning to rhyme. I've even been working on some original poetry. Ahem. If you ask me how I'm doing, I'll always let you know. If you need to know the weather, I'll tell you if there's snow. I have jokes at my disposal. If you're ever feeling low. But please don't bring me in a boat. 'Cause I don't know how to row. Hey Google, who is better, you or Siri? I think Siri's great. I'm definitely more googly. Hey Google, why is Siri better than you? Frankly speaking, I am a really good assistant. Siri is also good. Hey Google, do you know Alexa? Alexa has such a soothing voice. I like it. Hey Google, tell me a fun fact. Alrighty. The Santa Cruz Sentinel says that if a bee decided to fly around the world, it'd need about an ounce of honey as fuel. Hey Google, which came first, the chicken or egg? On the website mnn.com, they say, so in a nutshell, two birds that weren't really chickens created a chicken egg, and hence we have an answer. The egg came first and then it hatched a chicken. Hey Google, let's get spooky. Hey Google, stop.